रिज्यूम हाथ में लिए बैठे हो और पता नहीं चल रहा है कि भाई करियर ब्रेक कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रही है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा हाउ टू रीफ्रेम योर करियर ब्रेक। बट सबसे पहले एक चीज जानिए, योर करियर गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम, द वे यू एक्सप्लेन द गैप इज द प्रॉब्लम। तो इसको हमें थोड़ा रिफ्रेम करना है। रिक्रूटर्स के दिमाग में क्या है? अनसर्टेनिटीज, राइट? तो रिक्रूटर्स रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये कैंडिडेट मुझे सर्टेन नहीं लग रहा है। तो इस अनसर्टेनिटी को हम कैसे दूर करेंगे, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। 4 स्टेप, एक टेम्पलेट, एंड देन आई टेल यू हाउ आई कैन हेल्प यू टू रिफ्रेम द गैप। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? तो सबसे पहली चीज रियलिटी देखते हैं। अगर आप सबैटिकल में हो, करियर ब्रेक में हो, डोंट फील बैड, राइट? 1 in 3 पीपल, 3 लोगों में एक बंदा, 1 in 3 पीपल हैज हैड, बंदा या बंदी जो भी हो, or many mothers also take break when they go on parenting leaves, right? And they want to come back. So 1 in 3 people has a career break. So there's nothing to be ashamed about. People have commitments. People have personal issues. People, sometimes market is bad. People get laid off. People have family commitments. Somebody is not well. So people take a break. People are tired. They just want a break. So how do we reframe this break, right? That's important. And the reality is that मेरे को भी एक break, I've also taken a break in my career. 2013 से 16, right? So I've had a 3.5 year break in my career, and then I came back, right? So gaps are normal. परेशान मत होइए। पुअर फ्रेमिंग देम इज कॉस्टली। अगर उसको ठीक से आप इस ब्रेक को रिज्यूम में नहीं समझाओगे, नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, आपको इंटरव्यू का प्रॉबिलिटी कम हो जाएगा, आपको हायरिंग प्रॉबिलिटी कम हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट मी help you out in this based on my own personal experience, okay? How you can get back to the job, right? So इस resume workshop में जैसा आपको बता रहा था मैं कि I'll tell you the 4 steps. तो सबसे पहली चीज, रिक्रूटर के दिमाग से डाउट कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू मेक द रिक्रूटर लाइक अस, राइट? तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि शायद ये रिसोर्स, दिस पर्सन स्किल्स आर आउटडेटेड, और मे बी बिकॉज ऑफ बैक गैप्स दे हैव थिंग्स लाइक कमिटमेंट इशू। ये थिंक क्या नहीं लेंगे तो फिर छोड़ के चले जाएगा, चली जाएगी। रिस्क हायर, right? No, I see a pattern on to hire. So, will this person quit again? So, lot of uncertainty is there in the recruiter's mind. It's your job. हमारा काम है, हमारे CV के through this blank paper when you fill it, right, on the career break or career gap, उस doubt को दूर करना है। ये बहुत important है, okay? Fine. So let's see how we're going to do that. So golden rule क्या है? Clarity builds trust. जितना आप अपने gap के बारे में clearly explain करोगे in a right way, you just can't go to a career break. Didn't like my manager, so I resigned. ऐसे कुछ hiring नहीं होने वाली, right? So you have to give good clarity and build trust with the recruiter, right? So how do you do that? So if you don't explain your gap, the recruiter will find the worst. तो gap को explain करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। Why most resumes fail? Vague language होगी, like जैसे कि career break, personal reasons, took time off, family break. So vague language is like a red flag. भाई अगर आप खुद क्लियर नहीं है, आप खुद नॉट कॉन्फिडेंट नहीं आपके ब्रेक के बारे में, कोई भी आपको क्यों हायर करेगा? तो फील कॉन्फिडेंट टू रीफ्रेम इट, राइट? So instead of saying that I had to take time off, start saying I intentionally use this period to grow. इस वक्त में मैंने इतना कुछ सीखा। सेम स्टोरी बट डिफरेंट नैरेटिव, डिफरेंट पावर। इंटेंशनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इंटेंशनली आई वांटेड टू ग्रो, दिस इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ वैल्यूएशन। Try to use this word at least once in your interview somewhere or on your CV, right? Intentionally, I've taken that step. Okay. Then next, so there are 4 steps as I told you. Rename और reframe a gap. Show value. उस gap में आपने क्या value हासिल किया है जो उनको add कर सकते हो. Show the skills developed and then show your readiness. Okay. Follow this order every time. So let's go in detail on renaming. Perception बदलाना है. Recruiter का perception कैसे बदलाएं? Never just write career break. रेज्यूम ब्रेक हो जाएगा, राइट? इंस्टेड टेल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सबैटिकल, स्किल अपग्रेड फेज। अगर कोई बीमार है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली से फैमिली लीडरशिप सबैटिकल। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर फ्रीलांसर थे, से इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग, राइट?
Like I myself, I had put in myself as a proprietor, as a trainer, because in my break for three and a half years, I used to train people, right? I mentioned about that. I also worked on a NGO project. I put that as a project, right? I explained those things, right? I showed whether my project management skills applied, what I learned in my PMP certification. I showed them where have I applied, right? Career transition period, mention them. Many people leave coding job to come back to management side, right? Career transition period. ऐसे आपको reframe करना है आपके ग्राफ को, बोल्ड लेटर्स में हेडिंग होना चाहिए, राइट? पुट अ सेपरेट सेक्शन फॉर योर करियर ब्रेक, ओके? लैंग्वेज चेंजेस द एंटायर परसेप्शन, इसको याद रखिए। सो फर्स्ट रीनेम योर करियर, जस्ट मत लिखिए करियर गैप, लेड ऑफ, ऐसे मत लिखो, राइट? इसको रीनेम करो अच्छे से। नेक्स्ट, शो वैल्यू, आपने उस वक्त में क्या गेन किया। लाइक जब मैं अपना गैप, करियर गैप में आई वांटेड टू कम बैक, first thing I did was I got trained on PMP certificate. I went for an interview, I got a feedback, and then I started training on PMP certification. I mentioned this is my PMP certificate, right? The first certificate came like 2016, 6 January 2016, right? So I got this certificate. Then I didn't stop there. I also did ITL certification, and then I also did an agile training course, right? So learning दिखाना है, continuous learning. And then I told them, where did I apply what I learned? Where did I apply the skills? How did I translate the skills I've learned for PMP certification? जैसे कि मैंने बोला कि मैंने टीम मैनेजमेंट किया, एनजीओ प्रोजेक्ट थे, हमने एक फिनिशिंग स्कूल बनाया फ्रॉम ग्राउंड, राइट? 14 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, टीम मैनेजमेंट था, रिसोर्स मैनेजमेंट था, बजट मैनेजमेंट था, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट था, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। सो फाइंड आउट सम projects where you can show your skills. See, I'm talking about project management certification. It could be any technical certification also. You talk about whatever is it, whichever phase of your career. Like if you're a technical, like trying to get back as a technical guy in the industry, talk about technical certifications, what you have learned. Okay, जैसे कि मैंने बोला था कि 200 hours of project management training, for 30-45 hours का ट्रेनिंग था, फिर मैं खुद बैठ के सीख रहा था एग्जाम के लिए, 150 प्लस आवर्स का एफर्ट था। सो एक्सप्लेन इन डिटेल। आप ऐसे नहीं करो कि एक दिन का क्रैश कोर्स किया, फास्ट फूड नहीं है। डिटेल में जब बोलोगे इतना हम सीखे हैं, तो पीपल गेट ट्रस्ट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट विद देम। आपकी क्लैरिटी हेल्प करती है आपको, राइट? इन फ्रेशर्स व्हेन दे आर गेटिंग, आई से गो एंड गेट ट्रेन फॉर एटलीस्ट लाइक 500 आवर्स, इसको डालो सीवी में, इसका बहुत वेटेज होता है इंडस्ट्री ट्रेनिंग का, राइट? सो डिटेल में समझाइए, शो द वैल्यू ऑफ ब्रिंगिंग इन। So I had put on a PM certification, Agile certification, ITIL certification, what learning I had done, what consulting I had done. Like I was kind of working on the NGO projects, freelancing projects. I was also training people. So summary is, अगर आपका resume बताता है, if you grew in that phase of your break, it counts. अगर आपका growth हुआ है तो मायने रखता है। ये चाहिए रिक्रूटर्स को, ये आपको दिखाना पड़ेगा। बैठिए, सोचिए, थिंक, अच्छा क्या डाल सकता हूं मैं, और फिर क्या डाल सकती हूँ मैं अपने करियर में, मैंने क्या सीखा। अगर नहीं सीखा है, देन वेट फॉर 3 more months, लर्न समथिंग, राइट? अभी एआई है, गेट सम एआई एसेंशियल स्किल्स, मेंशन अबाउट दैट, राइट? ये कीजिए, शो वैल्यू, देन हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड एंड गेटिंग हायर्ड आल्सो। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, शो द स्किल्स, ट्रांसलेट। जस्ट डोंट टेल टुक केयर ऑफ फैमिली। अब देखो, इसमें मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आई जस्ट क्या पीएमपी पास, आई हैव ट्रांसलेटेड समथिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल है, टुक केयर ऑफ फैमिली सच है, मैनेज बजटिंग और प्लानिंग। अगर somebody is hospitalized, you have to manage a budget, you have to coordinate with people, talk to the doctors, and you have to kind of manage the logistics, right? अरेंजमेंट्स करने हैं। सो थिंक लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सो देखो, जो स्किल चाहिए उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई ट्रांसलेट माई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स फॉर द एनजीओ प्रोजेक्ट, राइट? ये दिखाइए। सो थिंक लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आप जो भी फील्ड में आप शिफ्ट करें, थिंक इन दैट रोल एंड देन connect the dots, right? And again, these keywords are very important because this will be picked up by the ATS in your resume. Scanning में ATS देखेगा, application tracking system देखेगा कि ये keywords आ रहे हैं कि नहीं। आ रहे हैं तो आपका CV shortlist हो जाएगा, right? To show skills, okay? Fine, reframe, show value, show skills. Last thing, show readiness, right? मैं फर्स्ट PMP ट्रेनिंग से अपना जॉब सर्च स्टार्ट नहीं किया। मैं जस्ट वॉकड इन टू वॉक इन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड देयर आई स्टार्टेड। I gave like 4 interviews before I got the offer in my 5th interview. Keep interviewing, right? Actively interview, get trained, get certified, be available immediately. Like अगर आपके पास जॉब नहीं, आप करियर कम बैक कर रहे हो, if the recruiter asks you when can you join, you should tell them yesterday. ऐसे बोलना चाहिए, like कल आ जाऊंगा मैं,
right? You are the person who needed a job, so you're like, I want the job today as it is. Don't tell them कि अच्छा अगर आप मुझे ऑफर दे रहे हो तो मैं मंडे से आऊंगा. अगर मंडे तक 4 दिन है, you never know what will happen in the next 4 days. Don't tell them the urgency. Like मेरा जब इंटरव्यू हुआ था यूएसटी ग्लोबल से, मेरे 2 राउंड इंटरव्यू हो चुके थे, मुझे अभी भी ऑफर आया नहीं था और 10 दिन से मैं वेट कर रहा था, राइट. फिर मैं एचआर को वापस कॉल किया, बोला कि देखो आई कैन जॉइन टुमारो, कल आ जाऊंगा मैं, आप बोलो, राइट. एंड देन शी गॉट बैक, इट वाज अ थर्सडे, लाइक ओके लेट मी जस्ट गेट बैक टू द हायरिंग मैनेजर को बोला, एंड दे हैड अ नीड समबडी हु कुड जॉइन इमीडिएटली, एंड देन हायरिंग मैनेजर ओके फाइन गेट हिम, राइट. थर्सडे हुआ, फ्राइडे बोला नो वी डोंट हैव न्यू जॉइनिंग ऑन फ्राइडे, कम ऑन मंडे. मंडे का ऑफर मिल गया मुझे, मंडे मैंने ज्वाइन कर ली. शो देम रेडीनेस, डिले मत दिखाओ, उनको रीच आउट करो, राइट. लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही वाज प्रिपेयरिंग टू गेट बैक, कंपनी से ऑफर लेटर अभी आना था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा था, एंड देन उन्होंने बोला कि ठीक है व्हेन कैन यू ज्वाइन, उसने बोला कि मंडे ज्वाइन करूंगा, एंड देयर वाज 4 डेज ऑफ गैप, राइट. अनफॉर्चुनेटली उस फ्राइडे को फ्रीज लगा दिया कंपनी ने, ही डिडंट गेट द ऑफर लेटर, ही कुडंट ज्वाइन. ऐसे गलती मत करना. शो योर जॉब रेडीनेस, ज्वाइन कीजिए इमीडिएटली, राइट. ये दिखाना है, शो विलिंगनेस टू ज्वाइन इमीडिएटली. दैट्स योर फोर्थ पॉइंट. फॉलो दिस फ्रेमवर्क एंड यू शुड बी एबल टू गेट गुड ऑफर्स और इंटरव्यू, राइट. अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ. बैड एग्जांपल इज लाइक जस्ट टेकिंग करियर ब्रेक फॉर पर्सनल रीजंस. नो कॉन्टेक्स्ट लुक्स वेरी रिस्की. ऐसे ही जाओ सीवी में डालोगे तो इट डजंट हेल्प आउट. इंस्टेड give a detailed example, good example. Intentional, professional development sabbatical from this time to this time. Completed this certification, did this freelancing work, right? Strengthened stakeholder communications, was able to manage this project, build agile and risk management skills. ऐसे डिटेल में समझाओ. जब आप ऐसे समझाओगे तो सामने वालों को अच्छा भाई ये अच्छा बंदा है, ओके. Even though there was a break, people understand. Remember, probably one in 3, even the HR might have been one among the three who would have got laid out sometime in the career, or we had taken a sabbatical or had a break. People relate. इसको जानिए, right? ऐसे कीजिए. So explain it nicely. Don't just put one liner, okay? And more importantly, I'm going back to the slide, right? If you don't value your break, your sabbatical, the recruiter is not going to value you. If you can't explain what you did in your sabbatical, आपको डर लग रहा है, अरे बाप रे, करियर ब्रेक है, ये गैप है, क्या लिखूं, मुझे पता नहीं चल रहा है. ऐसे रहेंगे तो वो भी बोलेगा कुछ भी नहीं है, राइट. वैल्यू योर ब्रेक. पर्सनल इश्यूज थे, एड्रेस करना है, सबकी लाइफ में होती है. हेल्थ इश्यूज थे, ले ऑफ हो गए, और या फिर आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ दिए, राइट. ठीक है, आ गए, अभी गेट बैक. हैव कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लेन द ब्रेक. दैट्स इंपॉर्टेंट. देन एक छोटा सा टेम्पलेट दे रहा हूँ आपको मैं. सो ब्रेक के बारे में बताइए. फ्रॉम दिस टाइम व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू बिल्ड, व्हाट डिड यू प्रैक्टिस, सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, करंट रेडीनेस स्टेटमेंट. इतना अगर आप डालते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, राइट. यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन द गैप इन अ वेरी नाइस वे, ओके, ऑन योर रेज्यूमे. देन टर्न career breaks into leadership assets, right. Framing, how to handle the gap in your next interview. So उसको reframe कीजिए, right. बोलो, like for example, I intentionally use that period to upskill, complete my PMP prep, strengthen my leadership skills, and now I follow ready to contribute immediately. I'm fully ready to contribute immediately, right. छोटा स्क्रिप्ट बनाइए, keep rehearsing that, right. और इंटरव्यू में जाओगे तो अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात करना है, राइट. we'll talk about more about interviews later on, but सीवी में ये सब चीजें डालनी है और कॉन्फिडेंस के साथ जाके एक्सप्लेन कीजिए, राइट. Why this word? It's forward looking. Short है, confident है, forward looking है. I'm fully ready to do something. I've learned this. I can add value. ये सब चीजें दिखानी है, right? Stop doing this. इंटरव्यू में जाके sorry sir, मेरे को कुछ और रास्ता नहीं था. I had to resign. I didn't have work. I had apologize नहीं करना इंटरव्यू में. भाई पर्सनल इशू था, पर्सनल रीजन था, लेना था, छुट्टी हमने ले ली, ब्रेक ले लिया. अब उसके लिए डोंट फील सॉरी. डोंट थिंक they'll hire you because you're sorry for it. And they'll think like अरे यार कितना रोना रो रहा है. This resource, I'm not going to hire this resource, right? Over explaining, why did you take the break? ये किया इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से. नहीं, be very brief. Sounding very defensive, saying that no, I had to resign because my manager was not good, it was a very toxic culture. Simple work-life balance adjust नहीं हो रहा था. We have to do that. That's it. Don't try to be defensive or hiding the gap. Gap ही नहीं दिखा रहे हो, उससे बड़ा गलती और गुनाह बोलूँगा, right? Putting fake experiences. Don't do that. Don't do those things, right? So don't apologize for your break. Don't over explain.
Don't sound defensive. Don't hide the gap. Hey, ईमानदारी से जाएंगे. Be honest and then go and explain things. Okay? Confidence से कीजिए. Then the reality of a gap is like a strength. Okay, your gap is something that is not a weakness. It's like a strength. So make it as a career asset. Okay. So आप गैप में आप ग्रोथ के बारे में बात करते हो, रेजिलियंस. सी मैं आपको बोलता हूँ, व्हेन आई केम बैक टू यूएस ग्लोबल इन 2016 after a gap of 3.5 years, the way I started working changed a lot. Back in 2012, I was not so highly accountable or an outstanding performer, right? I was like average or exceeding expectations, right? But when I came back, my accountability increased. The way I looked at things was different. So the sabbatical taught me so many things. Break. When you are going through tough times, you will understand so many things, right? Resilience develop होता है, perspective change, maturity आ जाती है, right? आपके अंदर एक leader बनना शुरू होता है, right? You will start developing a lot of leadership qualities. ये सब चीजें आपको gain हो जाएंगी sabbatical से, which are not there in other people, right? So when you go back and work, you'll see all these things. ये मैंने देखा है खुद अपने career में, right? You will become a better leader. So these are so many things you have gained, not just the technical knowledge, the hard skills, these are soft skills, right? Growth, resilience, perspective, maturity. ये सब चीजें बहुत ऐड करेंगी वैल्यू आपको आगे चल के. Then finally, these tips किसके लिए काम है? If you're feeling stuck or invisible in your career, if you had a layoff, you took family time off, switching to project management career or any career, right? If you are having a career comeback, then this video is going to help you. Please do share with people in your network whom you think this could help. If you are yourself preparing, use these tips. Sit down. The blank resume should not make you afraid. Blank resume डरना नहीं career break के लिए. डालिए इसको, बैठिए आधा घंटा बैठिए, काम कीजिए इसके ऊपर, and then you'll have good resume which will win the confidence of the recruiter. Uncertainty, anxiety, doubt सब दूर हो जाएगा, and then they might call you for an interview. Right? So don't hide your story. Turn your gap into an opportunity. Growth, credibility, opportunity. दिखाइए, credibility बढ़ाइए. It's an opportunity for you. Right? Finally, let's reframe your resume, right? So comment section में comment कीजिए what were the things you did in a sabbatical. I'll reply back like how you can reframe this in your resume. Please do share, like, subscribe this channel and share it with others. Do comment. It helps a lot for me to take the message to larger masses, right? But do comment like what were the things you did in your sabbatical. I'll try to reframe it. You can use it in your CV. Thank you for watching my video. This is Arham Faraaz for your career success and growth. Thank you. Bye-bye.